Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sakshi Aggarwal. In case you're new here, then I make videos on makeup, fashion, lifestyle and vlogs. And अभी मैं बहुत अजीब लग रही होंगी आपको, ऐसे सैंटा बनी हुई क्यों घूम रही हूँ, बट क्रिसमस आ रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए. एंड दिस इज़ हाउ आई एंड अप डूइंग इट. एंड आई थॉट कि क्यों ना मतलब आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मैं क्या कर रही हूँ. So I created this Christmassy vibes look. I hope you will enjoy this video as this. So if you like this video, then please give it a thumbs up. Please comment down below. Please type Merry Christmas. Without any further ado, let's get into the video. So guys, skin preparation मैंने off camera पहले ही कर ली थी and मैंने अपनी eyebrows भी groom कर ली है, as you can see. And आपको यहाँ पे ज़्यादा white मतलब डिस्कलरेशन दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कंसीलर लगाया था अपने ब्राउज को क्लीन करने के लिए. सो चलो आगे बढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द. एंड अगर आपको देखना है कि मैंने अपने आईब्राउज कैसे ग्रूम करी तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी. यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट. आई विल मेंशन समवेयर हियर और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो यू जस्ट हैव टू चेक दैट आउट. एंड फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज DM प्राइमर. And priming my eyes very well. So now I am applying some concealer over my lids. Beauty blender and blending it. So now after concealing my lids, I'm using this compact powder and just taking a little bit, dusting it and dabbing it. So we are gonna be doing this eye makeup, red shade, and just apply it into your crease line. Just like so. And in the corner, in the outer corner, you just have to flick it. You don't have to dab it, you just have to flick it like so. Like so. Now after this, I'm going to use this fluffy brush from Pack Cosmetic and just blend it. Just have to cut my crease, and for that I'm using this concealer brush from Pack. Some concealer on it. Have to take the white shade and dab it into the concealer. Now the red and white shades are done. Now I'm just cleaning. You can take any tissue or wipe.
like this. They both have to be equal, and just clean around your eye area. Now you just have to take this flat brush and take a white shimmer shade. आप उसे वैसे भी छोड़ सकते थे, लाइक एकदम वाइट, मैट वाइट को, बट थोड़ा क्रिसमसी वाइब्स है तो थोड़ा शिमर वाला बेटर लगेगा, आई गेस. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट इट. क्लीन कर लेंगे. You have to clean your lashes as well. So now I'm just doing some color correcting on my face. I don't know why these dogs are barking so much. I have to upload the Nykaa haul since a very long time. और वो मैंने फिल्म भी कर रखा है, सब कुछ हो रखा है, बस मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा है. I don't know when I'm going to edit it. Actually, you know, मेरे पास 4 वीडियोज़ एकदम रेडी पड़ी हैं, but it's just I'm not feeling like to upload them. So don't know. Maybe I'll just make a new one, so then I'll upload it. And I got a new makeup vanity for myself, so if you guys want, I can show you in the next video and give you a vanity tour. So yeah, if you guys are interested, then please let me know in the comments down below. I'm just going to take the same blender and blending it. और मैं कोई ज़्यादा हेवी बेस नहीं दे रही हूँ कि जिससे मेरे एक्ने मार्क्स एकदम हाइड हो जाए या कुछ. आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल. Face. Don't forget to cover your neck as well.
अभी मैं जनरली जो पहनने वाली हूँ वो एकदम हाई नेक है, तो इसीलिए मैंने नेक पे इतना कुछ किया नहीं है. So now just blend blend blend. Don't think कि आपको इससे एकदम अच्छी कवरेज मिलने वाली है. This is not a full coverage base. This is just for the shoot purpose. और डेली में इतना हैवी बेस मैं कैरी नहीं करती हूँ. और आपको भी नहीं करना चाहिए. मैं इसकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी, सो डू चेक दैट आउट. एंड अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो फॉलो मी देयर. मैं वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट आती हूँ मेकअप के OOTDs एंड रील्स भी बहुत अपलोड करती हूँ मैं. लेट मी जस्ट शो यू वन. जन्म तुझको पाते खोरी तेरे नैनों में हम बस जाते. So this is how I upload reels on my Instagram. You can surely follow me there. So now the blending is done. Same powder, the Fit V1. Just going to dust it off and dab it. So now I'm just taking this Nika's Duo Shade Blush and this blush brush and just tapping it, dusting it and applying it. In the drop shack. And this process takes a lot of time, trust me. If you need a perfect pouty lips, you need to have a lot of patience.
Lining is done. Now I'm applying the red lipstick on it. I really love very pouty lips. So this is how the look turned out and I'm quite happy and satisfied with the look. ये मुझे बहुत परेशान करता है. So guys, do let me know in the comment section if you like this look or not. And if you are going to recreate this for the Christmas, then please do tag me and I'll be happy to post your look. And yeah. So guys, Merry Christmas and enjoy your day. So I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.